Hello, dear student. I virtually again welcome you all in Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. I belongs to Department of Chemistry. Myself, Kanchan Vishramji Kumbhalkar, and I am taking your thermodynamics unit in chemistry. So this is the overall syllabus. In fifth unit, in previous lecture, we discussed about adiabatic and isothermal processes. We completed work done in isothermal process. In this lecture, we deals with the work done in adiabatic process. So let's start third lecture of thermodynamics, unit 5. In previous lecture, we conclude with the work done in reversible isothermal expansion. पिछले लेक्चर में we completed the reversible isothermal expansion. उसमें 3 चीज़ें बोली थी. पहला था reversible. Reversible means at a any stage, reaction के कोई भी stage पे the reaction can be get backward. वो पूरा का पूरा reverse हो सकता है. Then that type of reaction is considered as the reversible. Isothermal means what? When the initial temperature and the final temperature is exactly equal, means there is no change in temperature, then that type of procedure is known as the isothermal. And what is meant by expansion? Expansion means there is an increase in volume, means work done by the system on the surrounding. So these are the meaning of these 3 words, that is reversible isothermal expansion. In previous lecture we draw a equation of work done for reversible isothermal expansion. In this lecture we derive a equation for that of the work done in adiabatic reversible expansion of an ideal gas. Now, what is meant by adiabatic? In first lecture we discussed it thoroughly. फिर से एक बार adiabatic मतलब क्या होता है? Adiabatic means there is no exchange of heat between the surrounding and the system. Means system और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का लेन देन जब नहीं होता है, then that type of process is considered as the adiabatic. For example, what is meant by system? System मतलब the system means it is a part of universe which is under observation. For example, आपने एक कप ऑफ टी भी ले लिया और उसका टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, इफ़ यू आर ऑब्जर्व दैट, अगर आप वो देख रहे हो, then that cup of tea is also considered as the system. और उसके आजू बाजू का जो भी होगा that is considered as the surrounding. Now adiabatic process means what? जो process जिसमें heat from the system is not transferred to the surrounding, या फिर surrounding से भी heat system में नहीं लेगा, means there is no exchange of heat between the system and the surrounding. मतलब एक chemical reaction एक जार में चल रहा है तो the heat cannot be escape into the surrounding, और surrounding का जो भी temperature रहेगा that is not affecting to that of the system. So system और surrounding में when the energy is not exchanged, then heat cannot be absorbed, heat cannot be evolved, then that type of condition processes is known as the adiabatic process. Reversible process means what? Reversible process means at any step of reaction, if the reaction get backward,
वो अगर फिर से रिवर्स हो जाती है, the reactant get converted into product. It is a continuous procedure. But if at any stage the reaction get reverse product to the reactant, then that type of reaction is known as the reversible reaction. And obviously the third point is that expansion. Expansion मतलब क्या? Expansion means एक सिलेंडर में सपोज आपने एक n मोल्स ऑफ गैस के फिल कर दिए, अब वो एक्सपांड होगा. एक्सपांड होगा मतलब द वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीजेज. अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब द एक्सपांशन टेक्स प्लेस. पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हेन द लीड विच इज़ अ फ्रिक्शनलेस लीड, जब वो आगे ढकेला जाएगा, ऊपर ढकेला जाएगा, means the volume has been increases, and that type of condition is known as the expansion. As well as the expansion is considered as work done by the system on the surrounding. Means we in this lecture we discuss about the expression for the work done in adiabatic reversible expansion of an ideal gas. Now, as earlier stated, पहले ही बताया है कि adiabatic means what? In adiabatic process, there is no exchange of heat between system and the surrounding. Now, some notations are there. Capital U is known as the internal energy. Small q is known as the heat absorbed or evolved. Small w is known as the work done. V is volume. T is absolute temperature and Cv is molar heat capacity. Now, what is meant by adiabatic process? Adiabatic process क्या होता है? When there is no exchange of heat between the system and the surrounding. ना हीट सिस्टम में सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी, ना सिस्टम से हीट इवॉल्व होगी. मीन्स Q is considered as a zero. Means heat absorbed or evolved is considered as a zero. Now, what is the first law of thermodynamics? What is the condition or what is the equation of first law of thermodynamics? First law of thermodynamics states that the energy cannot be created, cannot be destroyed. One form of energy get converted into the another form. आप कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो. देर इज़ अ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हो तो दैट फूड विच इज़ कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, दैट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एटीपी जनरेट करता है और वो एटीपी यूज एज अ एनर्जी सोर्स. मीन्स द फूड गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. Means one form of energy get converted into the another form of energy. You cannot create it. Means the first law of thermodynamics state that energy cannot be created, cannot be destroyed. It get converted into one form to another. So एक इक्वेशन निकल के आता है for a first law of thermodynamics that has been stated as below, that is du is equal to q plus w, where what is du? Du is a change in internal energy, where q is, it is considered as the heat, and what is w? W is known as the work done. दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं. व्हाट इज द डी यू? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहाँ पे यूज़ की जा रही है? वो दो जगह पे ही, दो जगह या फिर दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हो. आइदर इन द सेंस ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एंड द वर्क डन. सो इन दिस केस, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2-3 दिन खाना नहीं खाया और आप पूरे थके हुए हो.
देन यू कैन नॉट वर्क वेरी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज योर एनर्जी लेवल इज लो, मीन्स वर्क डन नॉट हैपन, वर्क डन नहीं होगा. मीन्स द इंटरनल एनर्जी, the change in internal energy is used in two way, either heat evolved or absorbed, Q, and W work done, means du is equal to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. But according to the adiabatic condition, Q is counted as a 0. So applying adiabatic condition, the first law of thermodynamics remain du is equal to W. Why du is equal to W? Because Q is counted as a 0. So Q 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? du and W, means du is equal to W. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे D लिखा है, यहाँ पे डेल्टा लिखा है. D means small change and delta means a large change, but it is a basically change, it's a final change. ये step by step रहेगा and this is the overall one. So D delta U, it is nothing but a change in internal energy is equal to the work done, means जो भी change in internal energy रहेगा वो पूरा का पूरा इन एडियाबैटिक कंडीशन पूरा का पूरा वर्क डन के लिए यूज़ किया जाएगा. सो हेंस द डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और वी कैन राइट अ माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. इस इक्वेशन को -1 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट अ माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. दिस इज योर first equation. Now the work is done by the gas at the expense of its internal energy. मतलब in a previous equation, in this equation it has been stated that कि work done किसके हिसाब से या फिर किसके वजह से हो रहा है, तो it is happened because of वो हो रहा है change in internal energy. Means the work done is done by a gas at the expense of its internal energy, means internal energy और work का directly relation है. But internal energy is a function of temperature. अगर temperature बढ़ता है या कम होता है, there is a obviously change in internal energy. For example, अगर आप गैस पे एक बर्तन में आप अगर पानी उबालने के लिए रखते हो, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग अ फ्लेम ऑफ योर, अगर आप गैस की फ्लेम बढ़ा देते हो, द वाटर स्टार्टेड टू बॉईल. जितना ज़्यादा आप एनर्जी दोगे, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे, पानी का मॉलिक्यूल उतने स्पीड से रोटेट होगा, उतना ज़्यादा बॉईल होगा. बट इफ़ यू गिव अ लो टेम्परेचर, देन वो उतना स्पीड से नहीं चेंज होगा. मीन्स इट हैज़ बीन स्टेट दैट, मीन्स इससे प्रूव होता है कि टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी पे इफ़ेक्ट होता है. सो हेंस इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मीन्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो decrease of internal energy result in lowering of temperature. पानी का फिर से एग्जाम्पल देती हूँ. अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल स्टार्टेड टू मूव. या फिर और एक एग्जाम्पल, अगर समर सीज़न है, अगर धूप है और आप सड़क पे चल रहे हो एंड आपके पैरों में चप्पल नहीं है और सड़क बहुत ज़्यादा गर्म है, क्या आप कंफर्टेबली चल पाओगे? नहीं. यू हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ेगा, तभी आप छाव के लिए दौड़ोगे. वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बढ़ गया. सो यू हैव टू इंक्रीज योर इंटरनल एनर्जी. इवन इफ यू डोंट वांट, देन ऑल्सो यू हैव टू रन. वन एग्जाम्पल इन द सेंस ऑफ वाटर बॉइलिंग अगेन. अगर आप पानी बॉईल कर रहे हो और आपने फ्लेम बढ़ा दी, तो बिकॉज ऑफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर,
मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स इजीली ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट में जाएगी. Hence, by increasing internal energy, the temperature can be monitored, or by monitoring a temperature, the internal energy can be modified. मतलब इंटरनल एनर्जी अगर कम है तो टेम्परेचर लोअर होगा, या फिर टेम्परेचर अगर आप कम रखते हो तो इंटरनल एनर्जी उसकी कम होगी. So, the final temperature in adiabatic expansion of gas decreases. Means in expansion, जब आप adiabatic expansion consider कर रहे हो, then the temperature of gas decreases. अगर आप compression कर रहे हो, compression means what? The volume has been decreases. जो पहले वाला वॉल्यूम रहेगा उससे एज कंपेयर टू फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज होगा. कॉम्प्रेस करना अगेंस्ट टू द एक्सपांशन. एक्सपांशन के अपोजिट है कॉम्प्रेशन. एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना, कॉम्प्रेशन मीन्स वॉल्यूम कम होना. सो इन अ कॉम्प्रेशन द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इन अ एडियाबैटिक एक्सपांशन टेम्परेचर decreases. So this is the effect of internal energy and temperature. Now from equation 1, what is equation 1? Equation 1 is equal to delta U is equal to W, where delta U is considered as the change in internal energy, W is considered as the work done. From above one equation, W can be calculated if we know the delta U. So for consider a equation, we know that internal energy, it is a function of temperature and volume. So it's mean that, इसका मतलब क्या होता है? What is mean by this equation? U is equal to function of T and V, where U is internal energy, T is absolute temperature and V is volume. Means इसका मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो तो उसका इंटरनल एनर्जी भी कम ज़्यादा होगा. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी गेट दिस इक्वेशन वेयर द when we take a change in temperature we must maintain a volume constant, और जब आप वॉल्यूम में चेंज देखते हो तब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा. सो द इक्वेशन कंसिडर्ड एज अ du is equal to du plus dt at a constant volume into dt plus du change with respect to dv at a constant temperature into dv. So the equation is du is equal to du divided by dt at a constant v dt into dt plus du dv एट अ कॉन्स्टेंट t इंटू dv. यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हेंस द इंटरनल एनर्जी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर when volume remain constant, and du upon dv means what? The change in internal energy with respect to the change in volume at a constant temperature. So the equation can be modified as in the sense of Cv. What is Cv? Cv is molar heat capacity. Molar heat capacity is having a formula that the change in internal energy with respect to the temperature at a constant volume. Means what? This whole term is nothing but a Cv. So put this whole term as a Cv. What is Cv? Cv क्या है? Cv है मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी होती है जब इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर. मतलब आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हो तो उसमें इंटरनल एनर्जी भी कम ज़्यादा होगी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम.
वॉल्यूम लेकिन आपने कांस्टेंट रखना है। एट दैट स्टेज जो भी हीट जनरेट होगी, जो भी हीट रहेगी, दैट हीट इज काउंटेड एज द मोलर हीट कैपेसिटी मीन्स CV. So the du upon dt at a constant V is substituted as a CV. इसको आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? CV से सब्सटीट्यूट करोगे. सो द इक्वेशन मॉडिफाइड एज, इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट बिकम्स du इज इक्वल टू CV into dt plus this whole term remain as it is, that is du upon dv at a constant temperature T into dv. But we know that for an ideal gas, the du upon dv at a constant T is equal to 0. So this whole term become a 0. So this whole term becomes 0. Hence the equation remain this much. That is du is equal to CV dt. Hence we get a equation du is equal to CV dt, where du is change in internal energy, where CV is molar heat capacity, and dt is change in absolute temperature during the procedure. Now for the simplification way, we integrate the above equation. What is the equation? du is equal to CV into dt. So CV is remain constant, it is depend on volume, so CV remain constant. du is a internal energy. There are two types of internal energy, initial internal energy and final internal energy, and T is initial temperature and T2 is a final temperature. Now in this case, differentiating the equation, that is du is equal to CV dt in a limit of, du का क्या लिमिट होगा? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, दैट इज u1 to the u2. and what is the temperature range? जब u1 रहेगा at that stage the T1 is the temperature, and जब u2 रहेगा internal energy, at that stage the T2 is counted as a temperature. That is a T1 is the initial temperature and T2 is the final temperature. Now after integrating and solving it, we get, आपको मिलेगा delta U, a final difference in internal energy, which is equal to the higher limit, that is u2 minus u1, final minus initial internal energy, which is equal to CV remain as it is, there is no effect on of integration, and dt integration of T1 to T2 dt का क्या होगा? Again the upper limit minus the lower limit, means in bracket T2 minus T1. So what is the equation become? Delta U is equal to CV T2 minus T1. But this is only for single mole. But if there is n moles of ideal gases in container, then for that purpose the equation become delta U is equal to n CV T2 minus T1. This is equation for that of the n moles. CV is considered as the molar heat capacity of a gas. But from the first equation, what is first equation? Delta U is equal to W, or minus delta U is equal to minus W. So delta U is equal to W था, यहाँ पे डेल्टा U is equal to n CV T2 minus T1 है. So we can write the W is equal to, we know that first equation क्या था कि डेल्टा U is equal to W, और अभी क्या डिराइव किया हमने? डेल्टा U is equal to n CV T2 minus T1, where delta U is a change in internal energy, n is the n number of moles of gases, CV is a molar heat capacity, and T2
the final temperature, absolute temperature, and T1 is the initial temperature during the reaction of the system. So W can be written as a NCV T2 minus T1. W can be written as a N into CV into in bracket T2 minus T1. So which this expression is for a work done in a adiabatic reversible expansion of gas. So this is the overall equation. Which equation? W is equal to delta U equals to NCV in bracket T2 minus T1, where W is work done in adiabatic reversible expansion of gas, delta U is a change in internal energy, N is number of moles, CV is molar heat capacity, and T2 and T1 are the final and initial absolute temperature respectively. And this is the final expression for the work done in adiabatic reversible expansion of gas. So for this lecture it has been done. In the next lecture we will start with expression showing relationship between pressure, volume and temperature. तब तक you take care, be safe. Thank you.